Now we start with integration's most important part. There are two methods or two most important categories in which this topic is divided. First is substitution method, which you can see here, substitution method. And second is integration by parts. As we start with the topic, let's start with integration by substitution method. अब यहाँ पे हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसको हम कोरोलरी भी बोल सकते हैं. ये तीनों रिजल्ट्स तो हम लिखेंगे, हम उनको डिराइव भी करके दिखाएंगे. दो डेरिवेशंस आर यूजुअली नॉट आस्क्ड इन एनी एग्जाम्स, बट जब तक हम वो प्रोसेस देखेंगे नहीं, वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द फर्स्ट रिजल्ट इज, we are going to write three results, out of which the first result is integration f dash x divided by f of x dx is equal to log of f of x plus c. यानी इंटीग्रेशन बोलता है कि अगर डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर आ रहा है, जैसे कि नीचे अगर tan x है डिनोमिनेटर में और ऊपर sec स्क्वायर x है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ मॉड tan x प्लस c. एक और रिजल्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, ये f डैश x लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय रूट f of x dx. देन इस इंटीग्रल का आंसर है, इस इंटीग्रल का आंसर है 2 टाइम्स 2 इंटू स्क्वायर रूट f of x प्लस c. यानी अगर क्वेश्चन ऐसा है, रूट के अंदर tan x है, मतलब f of x के जगह पे tan x है और ऊपर sec स्क्वायर x है, वहां रूट नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 2 टाइम्स रूट tan x f of x के जगह पे प्लस c. वी विल टेक मेनी एग्जांपल्स इन सम टाइम. ये तो ऐसे ही जब रिजल्ट दिख रहा है तो सामने सामने कुछ बता रहे हैं. एक और रिजल्ट देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x रेज टू n into f dash x dx का रिजल्ट है f of x रेज टू n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 प्लस c. यानी अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, फंक्शन के पावर को वहां इन्वॉल्व नहीं कर रहे डेरिवेटिव के वक्त, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर n को साइड पे रख दो, देन दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू f of x रेज टू n plus 1 अपॉन n plus 1 प्लस c. अब जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे तब हम शायद इन तीनों को कभी यूज ना करें, बट जब आपका चैप्टर पे ग्रिप आ जाता है, जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े सम्स डायरेक्टली ये तीन रिजल्ट से हो जाते हैं. टू समराइज दिस, वी कैन से दिस वे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कोई भी सम कर पाएंगे, लेकिन ये तीनों रिजल्ट से पूरा चैप्टर सॉल्व नहीं हो सकता. ये सिर्फ एक कन्वीनियंस है. अगर कभी कभी ये फॉर्म में आ जाते हैं तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. लेट अस डिराइव ईच ऑफ देम. दो डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टिल हम डिराइव करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो यहां से हम हमारा चैप्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. चलो सपोज हमें फर्स्ट वाला डिराइव करना है, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, जो मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूट, या लेट लिख सकते थे, लेट f of x को हम t मानते हैं. कुछ तो सब्स्टिट्यूट किया, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, से हमने t लिया. लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x.
Now when you differentiate with respect to x, f of x is represented as f dash x and derivative of t with respect to x is dt upon dx. t का डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, वो एक वेरिएबल है. अब dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, सो वी गेट f dash x dx इक्वल dt. अब हम कोशिश करते हैं हमारा फर्स्ट इंटीग्रल को प्रूव करने का. देखो यहां f dash x dx दिख रहा है हमें. ये जो हमने अभी सर्कल किया है वो हमें यहां पे भी दिख रहा है, वो हमें यहां पे भी दिख रहा है. अगर हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की होती तो देखो ये जो f dash x dx है उसको क्या लिख सकते हैं. देखो क्या लिखा है, इक्वल टू dt. यानी ये जहां पे भी ये रेड सर्कल्स बनाए हुए हैं तीनों में, वहां हम dt लिख सकते हैं. दैट्स व्हाई our first result will be integral. हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, समझाने के लिए LHS लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, ये सर्कल के जगह पे आ जाता है dt क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करा रहे हैं, डिवाइडेड बाय f of x. बट f of x को तो t माना है हमने, t. अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पढ़ के रखा है कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log mod x, तो 1 अपॉन t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t, log टू द बेस e t प्लस c. अब t को रीसब्स्टिट्यूट कर दो. अब t की वैल्यू तो f of x थी, तो हमारा पहला आंसर हो जाता है log ऑफ mod ऑफ f of x लिख रहे हैं प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c. देखो वही था ना हमारा RHS इज इक्वल टू RHS. देखो हमारा प्रूफ खत्म हो गया. एक और लेते हैं, सेकेंड वन. LHS इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई रूट t. अब रूट t को पावर हाफ मान लो, हाफ ऊपर जाएगा तो t रेस टू माइनस हाफ होगा, सो t रेस टू माइनस हाफ dt हो जाता. This is like x raised to n, whose integration is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Therefore, t raised to minus half plus 1 can be written as half divided by half plus c. ये 2 डिनोमिनेटर का हाफ का 2 ऊपर चला जाता है और इसको स्क्वायर रूट लिख लेते हैं. So this is equal to 2 root t plus c. Let us resubstitute t back as f of x. So ये हो जाता है 2 root f of x plus c, which is your RHS here, which is our RHS. थर्ड रिजल्ट देख लेते हैं. लेट्स प्रूव थर्ड वन हियर ओनली. थर्ड यहां लिख लेते हैं. HS is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of x के जगह तो हमें t लिखना है, n ही रहेगा, सो इट इज t रेज टू n. एंड ये जो सर्कल किया है वो तो हमें मालूम है dt है. अब t रेज टू n dt का इंटीग्रेशन है t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. लेट अस रीसब्स्टिट्यूट t के जगह पे बैक एज f of x. सो ये बन जाता है इक्वल टू f of x रेज टू n प्लस 1. हमने t के जगह f of x लिखा है, बाकी तो वही कॉपी कर रहा है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c. वही है ना हमारा RHS, वही है हमारा RHS. यानी हमने तीनों रिजल्ट्स को प्रूव करके दिखा दिया. अब मैं समझ रहा हूं कि आपको पूरा डिटेल में इसका एप्लीकेशन नहीं स्ट्राइक हो रहा है या समझ रहा है, बट एटलीस्ट ये जो रिजल्ट्स है वो हमारे दिमाग में थोड़े बहुत सेट हो जाने चाहिए. अब हम शुरू करते हैं हमारे सम्स से. पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम यही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे फॉर सॉल्विंग ऑफ सम्स.
तो जब ये t लिया जाएगा हमेशा यहाँ डेरिवेटिव के बाद dt बाई dx आएगा, dx जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ न्यूमरेटर पे दिखेगा। स्टार्टिंग विथ अवर फर्स्ट सम हमने क्वेश्चन रखा है, यहाँ 3 क्वेश्चन है, पहले एक एक से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब अगर ऑब्जर्व करो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 है, -1 का तो 0 है, यानी ये जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है रूट के अंदर वाली उसी का डेरिवेटिव ऊपर है। यानी अगर आप इसे प्रीवियस रिजल्ट से कंपेयर करो तो ये रिजल्ट नंबर 2 जैसा दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा निकलना चाहिए 2 टाइम्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी। बट टू बिगिन विथ, बिकॉज हम बिगिनर्स हैं, टू बिगिन विथ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डूइंग इट बाय द कोरोलरी या रिजल्ट जो ऊपर मिले थे। लेट अस प्रैक्टिस सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। लेट अस सब्स्टिट्यूट या लेट लिख सकते थे, सब्स्टिट्यूट लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पे एक हिंट दे सकते हैं कि जो भी क्वांटिटी है जो रेडिकल साइन स्क्वायर रूट के अंदर है उसको आप टी ले लो, उसको आप टी स्क्वायर भी ले सकते हैं। क्यों? सो दैट ये रूट हट जाता, रूट टी स्क्वायर टी दिखता डिनोमिनेटर में। हमें जो कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है हमारे पे, बट एक ये जो चॉइस है कि इसको टी लेना है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये स्टार्टिंग के 2-3 सम्स में ये स्टेटमेंट लिखेंगे, बाद में आपको याद हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2x -1 का डेरिवेटिव तो कुछ है नहीं, इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx को यहां ले लेते हैं। अब क्वेश्चन के पास फिर से चले जाओ, 2x -1 dx, 2x -1 dx कितना है? बराबर इक्वल टू dt, यानी न्यूमरेटर की जगह पे क्या आने वाला है? dt, और डिनोमिनेटर की जगह पे क्या आने वाला है? रूट टी, क्योंकि रूट तो है ही, अंदर के वैल्यू को हमने टी माना है। अब dt अपॉन रूट टी लिखना है हमें, तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो समझाने के लिए रेड में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट टी। dt अपॉन रूट टी हमने अभी थोड़े टाइम पहले ऊपर किया, अगर याद नहीं आ रहा है एक बार ऊपर स्क्रॉल करके देख लेते हैं। हमने अभी देखा dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन है 2 रूट टी प्लस सी। इसको याद रख लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो ये हो जाता है हमारा इक्वल टू 2 रूट टी प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन नहीं लिखना है क्योंकि आपने फॉर्मूला से उसका रिजल्ट लिखा है। अब रीसब्स्टिट्यूट कर दो टी को बैक एज 2 तो रहेगा ही, रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। और यही आंसर हमने पहले भी आपको बता दिया था कि यही आएगा विद द हेल्प ऑफ कोरोलरी। बट हमने कौन से मेथड से शुरू किया है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? द चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आप किसको टी लेते हो, ये सबसे जरूरी होता है। पहले सम से तो पूरा नहीं समझता, वी हैव टू डू मेनी एग्जाम्पल्स, लेकिन इतना करेंगे हम यहाँ पे कि आपको फिर ग्रिप आ जाना चाहिए चैप्टर पर। एक और करते हैं, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप देख रहे डेरिवेटिव इज द की स्टेप, डेरिवेटिव लेना ही है हमें। हम जानते हैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स वाई हम सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स x को t
यहाँ स्टूडेंट्स को डाउट आता है, सर पिछले सम में हमने डिनोमिनेटर के टर्म को टी लिया, इस बार न्यूमरेटर के टर्म को टी कैसे ले रहे हैं। ऐसे सोचते हैं कि कोई बच्चे ने डिनोमिनेटर को टी ले लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वो टी लेता, तो उसका तो डेरिवेटिव आता उसको 2x dx इक्वल टू dt। अब न्यूमरेटर में है क्या 2x dx? बिल्कुल नहीं है। तो अब हमारे पास चॉइस क्या बचता है, न्यूमरेटर के टर्म को देखना। तो tan इनवर्स x को t अगर मानते हैं तो क्या उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्वेश्चन में? है। दैट्स हाउ you make a choice of your substitution. Let's write differentiate with respect to x. Differentiate, ये पहले 2-3 सम में लिखेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे स्टेटमेंट, बट डेरिवेटिव लेना है हर सम में। सो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। अब देखो 1 इंटू dx तो dx ही होता है, तो समझाने के लिए यहाँ सर्कल कर देते हैं। देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वही है ना यहाँ पे भी। अब ये जो सर्कल किया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू dt। तो dt तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा। हमेशा याद रखना dt न्यूमरेटर में ही आएगा कोई भी सम में। और ये पार्ट को हमने क्या माना था, ये पार्ट को हमने क्या माना है, t माना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आना चाहिए, अब हम इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं फिर से। तो कॉपी डाउन द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड राइट डाउन t dt। अब t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। एक बार आंसर आ जाता है देन सब्स्टिट्यूट t एज tan इनवर्स x। सो फाइनल स्टेटमेंट आंसर tan इनवर्स x द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, यही है आपका आंसर। एक और करता, द चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम वो सब एल्जेब्रा नहीं करेंगे, रैशनलाइज या वो सब नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है कि उससे रूट हटेगा, बट फिर न्यूमरेटर में रूट आ जाएगा। ऐसे टाइम पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a रेज टू x इज इक्वल टू t। इसका रीजन है कि हम देख पा रहे हैं कि अगर इसको t लिया तो रूट के अंदर बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है साइन इनवर्स t। अब न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव a रेज टू x का तो a रेज टू x के फॉर्म में ही आता है। चलो एक बार और लिख लेते हैं स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो a रेज टू x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, इज a रेज टू x log a इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx यहाँ आ जाता है इज इक्वल टू dt। अब हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमरेटर में है a रेज टू x dx, ये है हमारे पास क्वेश्चन में। तो जबकि हमारे पास यहाँ पे a रेज टू x है, यहाँ dx भी है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है हमें यहाँ पे जहाँ ऊपर सर्कल किया, बट ये log एक एक्स्ट्रा बर्डन है। अब log a तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम dt से डिवाइड करवा देते हैं, यानी के this looks like a raised to x dx equal to dt upon log a to the base e. Now let's go back to the question and copy down the integration symbol. In the red color circled region we will write dt upon log a divided by रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, क्योंकि लॉ ऑफ इंडाइसिस आप जानते हैं a रेज टू 2x का मतलब होता है a रेज टू x रेज टू 2b। तो a रेज टू 2x अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ये तो t था आपका, हेंस टी स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। नाउ
दिस 1/log a वो तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। क्यों बाहर ले सकते हैं? क्योंकि उसमें t नहीं है, तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो बचा क्या क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन dt/1 - t², जिसका इंटीग्रेशन हमने रटा है, ये इंटू लिखा है, साइन इनवर्स t प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। नाउ सब्स्टिट्यूट t के जगह पे a⁻x and that should be our last step, is equal to, final answer is equal to 1 into sin inverse t, तो sin inverse t है, so we can write sin inverse a⁻x t के जगह पे upon log a to the base e plus c. This is the answer to your integration question. In all three sums, the choice of substitution is important, and this will happen with more and more exposure to questions. Let's take more questions. हमें कैसे सोचते रहना है? कौन किसका डेरिवेटिव है? log x का डेरिवेटिव 1/x है ना? देखो यहाँ पे अपॉन x लिखा है, तो हम log x को क्या मान सकते हैं? t मान सकते हैं। मान सकते हैं यानी सब्स्टिट्यूशन। लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग सब्स्टिट्यूट log x is equal to t, so its derivative is, अब यहाँ डिफरेंशिएट स्टेटमेंट नहीं लिखते जो पीछे के सम पे लिखा था, 1/x dx is equal to dt. Let us continue. Is going to become integral of, फिर से समझाने के लिए, dx/x पे सर्कल किया हुआ है, और वही तो है ये 1 into dx, तो dx ही अपॉन x है, तो ये जो सर्कल्ड क्वांटिटी क्वेश्चन की है वहां dt आ जाएगा, और dt हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, सो यहाँ dt आ जाएगा, और log x को तो हमने t माना है, तो ये बन जाएगा t²। सो व्हेन यू राइट इंटीग्रल सिंबल, मेंशन t² dt, its integration will become equal to t³/3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। t के जगह हमारा काम है टू रीसब्स्टिट्यूट, so write log x to the base e whole cube divided by 3 plus arbitrary constant c. एक और क्वेश्चन सेम टाइप का, आप सोचो अभी एक 10 seconds I am giving you to think what will be your substitution in the next sum. Similar to previous, तो फिर से वही स्टेटमेंट्स लिखना है, सब्स्टिट्यूट, सोच लिया, आई होप मोस्ट ऑफ यू हैड थॉट दिस ओनली, log x is equal to t। यहाँ हमेशा बेस में e होता ही है, हम लिखे नहीं लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, आई एम राइटिंग इट एवरी टाइम to just to tell us that it's a natural base. Let's differentiate. तो 1/x dx is equal to dt. समझाने के लिए सर्कल कर रहे हैं, dx/x क्वांटिटी जो यहाँ है 1 into dx, और dx ही अपॉन x, तो ये सर्कल्ड क्वांटिटी क्वेश्चन की है, वो पूरा रेशियो क्या बन जाएगा? dt, और dt न्यूमरेटर में आएगा, यानी यहाँ dt आने वाला है, और डिनोमिनेटर में बनेगा t⁻m. So let's go back to the question. We should copy the integration symbol, dt upon t⁻m. Take t⁻m in numerator, dt. Integration you all know is t⁻m plus 1 upon -m plus 1 plus c, x raised to n का इंटीग्रेशन। लास्ट स्टेप, t के जगह पे let us write log x, so this becomes log x raised to -m plus 1, or you can simply write 1 - m also,
डिवाइडेड बाय माइनस एम प्लस वन लिखो या वन माइनस एम लिखो प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. ओके, वन मोर. हियर ई का पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर है. तो यहाँ हम एक ऐसा हिंट बनाते हैं खुद के लिए कि जो भी पावर बैड है, वैसे बैड करके कोई चीज होती नहीं है, बट वॉट एवर इज इन द पावर वी शुड थिंक ऑफ पुटिंग दैट एज टी फॉर अ मोमेंट. जैसे कि लेट अस देयरफॉर सब्स्टिट्यूट वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. हमने क्या सोचा, ये जो पावर है हम इसको बोलते हैं बैड पावर. वैसे बैड है नहीं कुछ, जस्ट समझाने के लिए. तो बैड पावर को टी लेने का सोच सकते हैं. ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा ट्रू ही होगा, बट हमारे लिए ये एक हिंट हो सकता है फॉर फर्दर सम्स. सो वन मोर टाइम, द बैड पावर इज टेकन एज टी. डोंट फॉरगेट टू डेरिवेट. इट्स डेरिवेटिव विल बी एक्स रेज टू माइनस टू ऊपर हो जाता है, एंड एक्स रेज टू माइनस टू का डेरिवेटिव होता है माइनस टू एक्स रेज टू माइनस थ्री. So minus 2x raised to minus 3 dx equal to dt. And x raised to n minus 1 किया. Therefore dx divided by x raised to 3 लिख सकते हैं is equal to dt upon minus 2. माइनस टू को डिवाइड करा दिया. ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन में माइनस टू नहीं था. तो जो नहीं था, जो फॉर्म है क्वेश्चन में, जैसे dx अपॉन एक्स क्यूब है, देखो dx अपॉन एक्स क्यूब मिला हमें, उसके जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? उसके जगह हमें लिखना पड़ेगा dt अपॉन माइनस टू. dt न्यूमरेटर में, माइनस टू डिनोमिनेटर में. सो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन एंड वी राइट इंटीग्रल e रेज टू t तो है ही. ये जो रेड में सर्कल किया उसके जगह आएगा इंटू डी टी अपॉन माइनस टू. लेट अस टेक माइनस टू बाहर, सो माइनस वन बाई टू बाहर, ई रेस टू टी डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ई रेस टू टी इज ई रेस टू टी प्लस सी. Let us resubstitute t back as 1 by x square. So final answer is minus 1 upon 2 e raised to 1 upon x square plus c. This is your answer. Let's take more questions. In this one, we have e raised to x upon 1 into 1 plus x upon cos square x ex. Now, this angle is not only x, it is something x into something, e raised to x. Such an angle, we call it as a bad angle. Just like पीछे के सम में एक बार बताया bad power. There is nothing like bad here again, just for your reference. So there is a hint hidden here that the bad angle, not power. The bad angle should be taken as t. So bad angle, पीछे के सम में था bad power, should be taken as t. So let's try this way. Substitute x into e raised to x as equal to t. After substitution, always derivative. Here both terms are in x, so product rule will be applied. U into v, rule of derivative. First term into derivative of second term e raised to x is e raised to x only, plus e raised to x into derivative of x is 1. Then after the derivative gets over, we multiply by dx for every sum is equal to t becomes dt. Clearly, e raised to x is common. In the bracket, we will get x plus 1 dx is equal to dt. Now observe the numerator. It is e raised to x 1 plus x dx, which matches with this.
That's the paper setter's work to present the question in that way. Now this red color portion of the question will become equal to dt, and this underlined quantity is going to become t. So question changes to dt upon cos square t. We never solve in denominator the integral, so we take it in the numerator. So this becomes sec square t, reciprocal of cos square t. Sec square t's integration is tan t plus arbitrary constant c. Do not forget to resubstitute t back as x e raised to x. So answer becomes tan x e raised to x plus c. Mark this question as important. And the most important thing is the choice of substitution. So या तो बैड पावर को टी लेना है, बैड एंगल को टी लेना है. ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये हमेशा वर्क करेगा ही, बट एक थॉट जरूर देना चाहिए फॉर द चॉइस ऑफ सब्सटीट्यूशन. एक और करते हैं. वी हैव x raised to 6 minus 1 and x here. Now our syllabus is restricted to quadratic, and to form this into a quadratic, it should be written as x cube the whole square, because x cube ka square looks like a quadratic if x cube is taken as t. So here the substitution is x cube is equal to t. Derivative is 3x square dx is equal to dt. Clearly, x square dx is equal to dt upon 3. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में न्यूमरेटर में सिर्फ dx है, x स्क्वायर नहीं है. तो हम अगर सोचे ये x स्क्वायर को भी यहाँ ले लेते हैं, तो इट वुड हैव लुक्ड लाइक ये x स्क्वायर को भी वहाँ 3 के पास ले लेते हैं, देन इट वुड हैव लुक्ड लाइक dt upon 3x square. ये स्क्वायर लिखा है. Therefore, the question becomes integration symbol. In place of dx, we will write dt upon 3x square, dt upon 3x square upon existing x. X raised to 6 can be written as x cube ka square minus 1. Now this x square and this x becomes x cube, and this x cube is t. So question becomes 1 upon 3 integral dt upon, one more time, this x square and this x won't cancel. They in fact will multiply and become x cube. This x cube is denoted as t. So that t comes in denominator. Root x cube is t. So t square minus 1. The question has to change in complete t form. You cannot integrate at this stage as there are two variables, t and x. So we had to get rid of x square, x, by multiplying and writing x cube, which is then written as t here. And then x cube square is t square, and then followed by minus 1. This is a standard integral. Its answer is sec inverse t. So answer is sec inverse t plus c. T is resubstituted back as x cube. Answer is 1 upon 3 sec inverse x cube plus c. If you want, you can put a bracket over this, else like this was also okay. Let us take one more. Here, x raised to 4 minus x raised to 1 by 4. If you think or observe well, this 4 and this 4 are matching, so there must be some reason or connection between them. Let us decide to take x raised to 4 outside as common. So
when we take x raised to 4 outside as common, it becomes only x, because when x raised to 4 is taken outside common, it will be followed with a power of half. So this x raised to 4 will become 1 minus this x is divided by x raised to 4, as there was nothing common. So write x raised to 4 here, the whole raised to 1 upon 4 upon x raised to 5 becomes equal to x raised to 4 and 1 by 4 cancels out. So only x remains. This x and this x raised to 5 becomes x raised to 4. So the denominator becomes x raised to 4, because x and x5 get cancelled and x4 remains. And in the bracket we have 1 minus 1 upon x cube raised to 1 upon 4 dx. Dx is here also. Here x cancels with one of the x, so x cube is remaining here. There was a fourth power here. And now this x-ray, this 1 by 4, whatever is there in the bracket, if it is taken as t, the derivative of 1 by x cube creates a 4 in the denominator. As when we write, we get it. Let's substitute 1 minus 1 upon x cube as t. Derivative is, once derivative is 0, imagine this becoming x raised to minus 3 in numerator. So its derivative is minus 3x raised to minus 4. Minus 3x raised to minus 4 is the derivative. So minus of minus is plus. So it is 3 upon x raised to 4 dx is equal to dt, if minus 4 power is taken down. This 3 can get divided here. So it becomes dx upon x raised to 4 is equal to dt upon 3. Let's go back to the question step, which is here. Dx upon x raised to 4 is equal to dt, while this circled value is taken by us as t. So question changes to t raised to 1 by 4 dt upon 3. Upon 3 can go outside as 1 by 3 is equal to 1 by 3. Integration of t raised to 1 by 4 is t raised to 1 by 4 plus 1 is 5 by 4 divided by 5 by 4 plus c. 4 goes in the numerator. So answer is 4 upon 3 5s are 15. In place of t, we write back 1 minus 1 by x cube. See here, t was that, raised to 5 by 4 plus arbitrary constant c. Slightly difficult one. Compared to the previous sums, we were not modifying the question and then substituting. We were directly taking the substitution. In this sum, we needed some modification, because had we taken directly this quantity as t, thinking 1 by 4 is a bad power, then its derivative would not be anywhere close to x raised to 5, and that would have not helped us to go forward. So for such algebraic questions where you see such a situation, you take x raised to 4 common in the numerator, but it is raised to 1 by 4, so 1 by 4 remains here. Then this x raised to 1 by 4 is 1, but this x did not have x raised to 4 as common, so we are dividing and writing x upon x raised to 4. Then x and x cancel, so 1 by x cube remains here. This x and this x raised to 5 on simplifying become x raised to 4. Once you reach here, this step, then you can take 1 upon 4 के अंदर का quantity as t, because its derivative is closer and able to form upon x raised to 4. Once the substitution has started, then it is achievable. Then you can solve the sum.
Let's take a few more. We are doing substitution method, continuing with more sums. Tan inverse जैसा sum हमने पहले भी किया था. In same way we practice this. I think most of you have already guessed that we will substitute tan inverse x cube is equal to t. The reason is that its derivative is 1 upon, derivative of tan inverse x cube is 1 upon 1 plus x cube the whole square into derivative of x cube is 3x square dx is equal to dt. This 3 is absent in the question. We can divide it that side. So it becomes x square dx upon 1 plus x raised to 6 x cube square is equal to dt upon 3. X square dx because it's written here. Now visit the question and realize that this dx and x square upon 1 plus x raised to 6, this red color circled quantity is written as dt upon 3, while this tan inverse x cube is t. So question is t times dt upon 3 is equal to, t's integration is t raised to 2 upon 2. 2 3s are 6. So it is 2 upon 6 plus t raised to 2 upon 6 plus c. Let us resubstitute t as tan inverse x cube raised to 2. x cube लिखा, raised to 2 upon 6 plus c. We cannot multiply 3 and 2. You know why? Because it's an angle of tan inverse. We cannot multiply. The next one. Tan x जब भी दिखता है तो sec square x याद आना चाहिए. क्यों? Because tan x का derivative is sec square x. Let us substitute tan x is equal to t. Derivative of tan x is sec square x dx is equal to dt. So the question, when you go back to the question, you know that it is sec square x, fourth power है तो 2 बार लिख लेते हैं sec square x मल्टीप्लाई किया dx upon root tan x. Now this sec square x dx can become dt. This is root t. So only this sec square x is a problem. But we know by identity, this sec square x can be written as 1 plus tan square x. So this is 1 plus tan square x. Then this is sec square x dx, which is dt, divided by root tan x is root t. But there are two variables in this integral. We cannot proceed. So we try to replace tan x as t, but tan square x, therefore t square. So we get integration 1 plus t square divided by root t dt. We have a monomial in the denominator. We can easily separate this out. So it is integration 1 upon root t plus t square upon root t, or t raised to half also is okay, dt. 1 upon root t becomes 2 root t. In the meanwhile, let's continue writing this as 1 upon root t. We are not trying to write it as t raised to half. The reason is we have memorized 1 upon root t as 2 root t. But this form we have not memorized. So इसको तो simplify करना पड़ेगा. 2 minus half होता है 3 upon 2 dt.
the integration becomes is equal to 2 root t plus t raised to 5 by 2 divided by 5 by 2 y 5 by 2 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 plus c. अब t के जगह हमें tan x सब्सटीट्यूट करना है. दैट्स द लास्ट स्टेप. यहाँ लिख लेते हैं साइड पे, यहाँ लिख लेते हैं लास्ट स्टेप. सो फाइनल आंसर इज इक्वल टू 2 root tan x प्लस tan x रेज टू 5 by 2. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan square x रूट tan x. अगर 5 by 2 लिखना है तो वो लिखो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं. डिवाइडेड बाय 5 by 2 कैन बी बिकम 2 by 5 हियर. This 5 by 2 of denominator is becoming 2 by 5 here plus c. How this 5 by 2 becomes like this? We know 5 by 2 is 2 1 upon 2. So 2 पावर यहाँ आ गया और 1 upon 2 पावर को स्क्वायर रूट में डाल दिया. Like this 2.5 is written. So if it was not 5 by 2, if it was 7 upon 2, it would have become 3.5. Then we would have written a cube here and a square root here. ठीक है, एक और देखते हैं. Come on now, you think what should be the substitution in this question? याद करो, हम बैड एंगल को t ले सकते हैं, ऐसा सिखाया. सो बैड एंगल कौन है? x स्क्वायर है. तो वी कैन सब्सटीट्यूट x स्क्वायर इज इक्वल टू t. फिर डेरिवेटिव लेना है, तो 2x dx इज इक्वल टू dt. अब 2 को डिवाइड करा दो क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है. सो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2. यहाँ सर्कल कर लेते हैं, ये x है और ये dx है. तो ये सर्कल्ड क्वांटिटी के जगह पे क्या आना चाहिए? dt अपॉन 2 आना चाहिए. Let's copy down the integral now. Let's copy down the integral. It becomes sine cube t cos t dt अपॉन 2. यहाँ t लिखा है x स्क्वायर के जगह. अब ये तो वापस प्रॉब्लम हो गया. बैड पावर है 3, उसके अंदर साइन t है जिसका डेरिवेटिव पीछे cos t है. तो हम फिर से एक बार सब्स्टिट्यूशन लेंगे. साइन t को से m ले लेते हैं. सो ये बन जाता है लेट साइन t इज इक्वल टू m. सो इट्स डेरिवेटिव इज cos t dt इज इक्वल टू dm. तो क्वेश्चन पे फिर से चले जाते हैं. इट बिकम्स m क्यूब dm, क्योंकि cos t dt हमारा dm है, बट अपॉन 2 तो बचा हुआ ही है यहाँ का, अपॉन 2. नाउ m क्यूब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू m इज m रेज टू 4 अपॉन 4. एग्जिस्टिंग 2 यहाँ का 8 बन जाएगा. सो ये बन रहा है m रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू 2. तो 4 2 जा 8 लिख लेते हैं प्लस c. बट m क्या है? m इज साइन t और t क्या है? x स्क्वायर है. तो आंसर इज साइन रेज टू 4 t के जगह x स्क्वायर अपॉन 8 प्लस c. अच्छा, जिनको कोरोलरी जो पहले के इंट्रोडक्शन में सिखाया था सब्स्टिट्यूशन का, और जिनको कोरोलरी जमता है, they could have gauged from here that this situation is like integral f of t raised to, या f of x समझाने के लिए, f of x raised to n f dash x dx जैसा है.
तो यहाँ ये 2 को साइड पे रख देते हैं 1/2 करके। अब देखो ये 3 हमारा n जैसा है, ये जो 3 है वो n जैसा है। क्या साइन t का डेरिवेटिव cos t है? देखो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x है, तो हम सीधा लिख सकते थे इट्स इंटीग्रेशन इज साइन रेस टू 4t अपॉन 4 प्लस सी। देखो सीधा इंटीग्रेशन हो गया, फिर से सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाया। अब खाली t के जगह एक्स स्क्वायर लिख देते हैं एंड में, तो देखो 2 4 से 8 एंड आंसर यही आ रहा। बट दिस कोरोलरी विल हैपन आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस एक बार हो जाती है देन यू कैन सॉल्व। Continuing, integration sec x upon log sec x plus tan x. We know sec x derivative is sec x tan x, which is not seen anywhere. So let's try log sec x plus tan x as t. Let log sec x plus tan x be substituted as t. Let's see what derivative comes. Derivative of log is reciprocal, therefore 1 upon sec x plus tan x into derivative of sec x is sec x tan x plus derivative of tan x is sec square x. After derivative gets over, we put a dx equal to dt. Clearly sec x is common in numerator, so we get sec x common, and in the bracket we are getting tan x plus sec x divided by sec x plus tan x, like this, dx. Addition is commutative, you can cancel the bracket. On cancelling we get only sec x dx. So when you cancel out this, you get only sec x dx, which is in numerator. So just to understand, this circled quantity here will become dt, while this entire thing was taken by us as t including log. So when we revisit the question, it becomes integration dt, because sec x dx is equal to dt is there, upon t, whose integration is log mod t plus c, and substituting t back, we get log mod log sec x plus tan x. This is the answer, plus c. Now some students are able to, with practice, know that this function's derivative is in numerator. So for them this is f of x and sec x is f dash x. So when it comes in the form of f dash x upon f of x, then answer is log mod f of x. This we have learned in the corollaries. And see, directly we can then relate, the answer is log mod f of x is log sec x plus tan x. Let's do this question by this corollary instead of the entire substitution method. You can do by substitution also. Just for a variation, let's do this sum by thinking of how to create the derivative of denominator in numerator if possible. We have a square plus b square sine square 2x. We all know sine square 2x ka derivative. The derivative of sine square 2x is 2 sine x cos x, which is sine 2x. See, it's visible upside. But the derivative of b square sine square 2x is
going to be having a b square also. So we will need a b square in the numerator. Only then the entire denominator's derivative can be thought of in numerator. The meaning can be rewritten as, so we are not going to substitution. Let's say we multiply and divide by b square. As it's a constant, you can write 1 upon b square outside integration symbol. B square sine 2x divided by a square plus b square sine square x. One more time for recollecting, this is f of x, and this entire thing in numerator is like f dash x. So our answer to this question is equal to 1 upon b square log mod a square plus b square sine square x. Students who wish to do this, let me just try to refigure this out, what happened. Students who wish to redo this sum by substitution method, they should take the entire denominator a square plus b square sine square x as t, and then also they can do this sum. You should, if you are doing this way, you should give the reason integration f dash x upon f of x dx is equal to log mod f of x plus c. So we are giving this reason also here why the answer is like this. Let's take the next question. We have integral 1 minus tan x upon 1 plus tan x. There is no one here who happens to be the derivative, as sec square x is not seen. But we can convert this in sine and cos form. By doing that, we get 1 minus sine x upon cos x divided by 1 plus sine x upon cos x dx. On LCM, we get integration cos x minus sine x. We are on LCM finding cos x into 1 cos x minus sine x upon cos x upon cos x plus sine x upon cos x will cancel out, and hence only this is remaining. We are used to now a habit of seeing if denominator's derivative is existing in numerator. Let's check. Cos x derivative is minus sine x and sine x derivative is cos x. So the denominator is looking like f of x and the numerator is looking like f dash x. We can straight away write the answer of this as equal to log of mod of cos x plus sine x plus c. This is the answer. And give the reason in the bracket, the same identity, integral f dash x upon f of x, which we just saw above, the same identity you can give again. Another way to do this same sum was substitution. Just in case someone is wanting to do this by substitution, we should substitute the denominator as t. So substitute likho ya let likho. Let cos x plus sin x is equal to t. So the derivative is minus sin x plus cos x dx is equal to dt, which is seen in numerator.
though this becomes integration dt upon t, which is equal to log mod t plus c, and you resubstitute t back as cos x plus sin x is equal to log mod cos x plus sin x plus c. So you are getting same answer. So substitution is like an evergreen method. वो most of the sums पे चली जाएगा. But this identity that denominator's derivative is in numerator may not happen in every case. Let's take up the next one. We have integral root tan x upon sin x cos x. In this question, let's change this tan x because it's looking like an odd one out. We can change tan x to sin x upon cos x. Or we can change or make it look like this, that tan x needs a sec square x. So if tan x needs a sec square x, we will need to have a cos square x here. Only then in numerator it will become sec square x. So we can write like this: root tan x divided by sin x into cos square x लिख लेते हैं. But when you do a cos square x here with an intent to create a sec square x in numerator, we will have to divide here in denominator also by cos x, as we have multiplied this single cos x with an extra cos x to form cos square x. So this is equal to integral root tan x divided by tan x sin x upon cos x, and the cos square x goes up and it becomes sec square x dx. We can LCM, or we can reduce this, not LCM. This becomes sec square x divided by root tan x, as root tan x upon tan x is root in denominator dx. Now we can substitute tan x as t. So let tan x is equal to t. So derivative is sec square x dx is equal to dt. This gives you integration dt upon root t, because sec square x dx is dt and root tan x is root t, is equal to, we have memorized this as 2 root t plus c, and resubstituting t we get 2 root tan x plus c. This is your answer. Just to recollect for ourselves, we have an identity here. Let's do by one more way, just to get an idea that if we are practicing this form of integration, f dash x upon root fx, इसका क्या रिजल्ट याद कराया था, है ना? वी हैव डन दिस रिजल्ट विद डेरिवेशन. क्या याद करा है? दिस इज इक्वल टू 2 root f of x plus c. So if we are focusing on this step here, if we are focusing here on this step, so see, this is f of x, which is like this, root is there here, and its derivative sec square x is in numerator. So straight away after this step, we can write is equal to 2 root tan x, 2 root f of x plus c. See, same answer we are getting. So here we did initially by substitution method. In case you are practicing a lot and if you have confidence on this corollary, you can write the answer directly and give this reason.
Name what is f of x, name what is f dash x, and write the answer. If you feel that this identity application is difficult, go with substitution method only. We have now some questions in e raised to x forms. We don't like negative power and we don't have a choice that its derivative is upside. So let's make this negative power positive by writing 1 upon e raised to x. So this is like e raised to x plus 1 upon e raised to x the whole square dx. Let's LCM this. So it is integration e raised to 2x plus 1 whole square, and in upon e raised to x within a square is e raised to 2x, that goes in the numerator. We can substitute. Yeah, let e raised to 2x plus 1 है ना, बैड पावर के अंदर 2 is a bad power के अंदर e raised to 2x plus 1 है. Let's take it as t. The reason is that its derivative 2 e raised to 2x dx, 1 का तो 0 है, is equal to dt. See, don't we have e raised to 2x dx here? So divide by 2 करा देते हैं, as 2 was not needed. So e raised to 2x dx is equal to dt upon 2. Let's go back to integration and write this as dt upon 2 upon t square. We have memorized 1 upon t square's integration is minus 1 upon t. So it is minus 1 upon t, and a 2 is also going to remain. So minus 1 upon 2t plus c. Resubstitute t back as e raised to 2x plus 1. So we get final answer minus 1 upon 2 bracket e raised to 2x plus 1 bracket closed plus c. This is your answer. Now here you can take just e raised to 2x also as equal to t. Don't take plus 1. It's up to you what you want to do in the denominator part, but we thought let us take entirely as t क्योंकि वैसे भी 1 का तो derivative 0 ही था. Then here it looks simply t square, which is minus 1 upon t as the integration. 2 is the denominator, hence it's appearing here. Don't forget to resubstitute. See, the next one looks more straight. We know straight away denominator's derivative. Check, e raised to x का derivative is e raised to x, while minus e raised to minus x derivative is plus e raised to minus x. Minus minus multiply ho. And therefore, we know the denominator is f of x, while numerator is f dash x. We can straight away solve this and write the answer in one step. Log of mod of e raised to x minus e raised to minus x plus c. Mention the reason. Reason is integration f dash x upon f of x dx is equal to log mod f of x plus c. If you don't want to do it this way, then we have our substitution method, or substitution method is always there for you. ये plus c लिखा था यहाँ पे. Substitution method, we can write let or write substitution e raised to x minus e raised to minus x equal to t. Differentiate करोगे तो e raised to x plus e raised to minus x dx is equal to dt.
So question changes to dt upon t, which is equal to log mod t plus c. Resubstitute t back as e raised to x minus e raised to minus x plus c. If we try to distinguish these two questions, in the first question we needed some simplification and then the sum started to get solved. While in this question, there is no need to simplify and directly we are able to get to the answer. So when you are practicing integration, directly substitution भी चल सकता है और कोई सम में नहीं चलेगा, where you have to first simplify and get into that substitution stage and then complete the sum. अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव पावर होने के बाद भी we did not take reciprocal like we did in the earlier sum because exact derivative was present upside. Then why we ऊपर यहाँ पे तो 1 था ना, so there was nothing upside to take it as a derivative. Here we have direct derivative up, so we did not disturb the negative power. Let's take one more. We don't like this root sign. So if we don't like this root sign, we have learned this way that let bad power half है क्योंकि root है, तो root के अंदर जो भी quantity है हमने ऐसे सीखा है let it be equal to t ले लेते हैं. अच्छा, और एक तरीका भी होता है कि हम इसको t स्क्वायर ले लें. अब इसको t स्क्वायर लेने का रीजन ये था कि जब फ्यूचर में ये रूट ऑफ t स्क्वायर लिखा जाएगा द डिनोमिनेटर पार्ट, तब ये रूट हट के सीधा t हो जाएगा, which will look for us more easy. That is why we are saying कि अगर ऐसे करना है तो भी चलता, we can take it as t square. उसी तरह अगर यहाँ पे suppose यहाँ पे क्यूब रूट होता, then we would have advised you to take it as t cube, so that cube root of t cube would have become t in denominator. If you just put t and solve, still you will get the answer. Let's say we take t square. Let's differentiate. Derivative of 2 e raised to x is 2 e raised to x only. Dx is equal to t square derivative is 2t dt. We can cancel out 2. 2 is cancelling out. And e raised to x is remaining. So we have dx is equal to t dt upon ex, or let's not cut this 2, let's keep it like this only, and let's write dx is equal to 2t dt upon 2 e raised to x. Now we don't like 2 e raised to x, so we can from the let point know that 2 e raised to x means t square plus 1. We can take 1 on that side. That's why we asked you to not cut 2, so that straight away 2 e raised to x can be written as t square plus 1. So it is equal to 2t dt divided by t square plus 1. In place of 2 e raised to x, we are writing t square plus 1. This is dx. Let's go back to the question. The question is now becoming 2t dt upon t square plus 1. That's in place of dx. See, dx is this. Upon root t square. Now root t square means t only. Let's put a t here only. And this t and this t cancels out. Is equal to 2 upon t square plus 1's integration is simply tan inverse t. So answer is 2 times tan inverse t plus c. Let us resubstitute t. So we get 2 times tan inverse of, now देखो t यहाँ पे substitution step को देखो, t square है,
तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, देन इट विल बिकम रूट 2e⁻x - 1 as t. सो यहाँ पे राइट स्क्वायर रूट 2e⁻x - 1 plus c. This is your answer. Let's take some more questions. We have done a question similar to this one. It's a bad power. Bad power को हम t ले लेते हैं. So let's substitute. Let m tan inverse x be equal to t. So derivative is m upon 1 plus x square dx is equal to dt. So we get dx upon 1 plus x square is equal to dt upon m. We have taken m here. M is a constant. We can freely take it here. Now let's encircle the quantity which we want to replace. This circled quantity will become dt upon m, while this value is going to become t. So this is dt upon m and t in the power of e. So the question changes to, question is going to come in t form. It is going to look like e raised to t dt upon m. But m is a constant. It will go outside integration or it will just stay there. You have to just keep it writing. E raised to t dt's integration is e raised to t upon m plus c. Resubstitute t as e raised to m tan inverse x, this is in power, upon m plus c. See, we have resubstituted t as m tan inverse x. तो देखो आप देख रहे हो कि दिस विल नीड लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. एक बार ये आपका हो जाता है लिख के, बस देन री प्रैक्टिस द सेम सम्स अगेन एंड अगेन. एक और करते हैं. वी हैव इंटीग्रेशन sec raised to 4x tan x. कैसे करेंगे इसको? आर यू थिंकिंग? अच्छा, sec x का डेरिवेटिव है sec x tan x. तो अगर हमने यहाँ पे ऐसे सोचा sec cube x, इंटीग्रेशन sec cube x sec x tan x, बराबर ना. फोर्थ पावर को हमने लिखा क्यूब इनटू sec. नाउ सी sec x का ही डेरिवेटिव sec x tan x है. सो यू कैन राइट लेट, बैड पावर के अंदर कौन है? sec x है. Let sec x be taken as t. So derivative is therefore sec x tan x dx is equal to dt. So question changes to, question becomes integration t cube dt, क्योंकि ये तो पूरा dt हो गया अभी. t cube's integration is equal to t raised to 4 upon 4 plus c. Resubstitute t back as sec x. So final answer is sec raised to 4x upon 4 plus c. Just in case you want to recall the corollary, some students later on practice a lot and they feel like applying this also. We have discussed one corollary with proof in earlier section. Integration f of x raised to n f dash x dx का रिजल्ट है is equal to f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, upon n plus 1 plus c. Now look at this, ignore this 3 for a moment, because this is n, this n. See, f of x is sec x. See, this is sec x, and sec x का ही derivative sec x tan x है. So this quantity becomes f of x
and this quantity becomes f dash x, and n हमारा है ही 3 था ही. तो अगर हमने इसको निकाल देते हैं वापस से. अगर हमने इस स्टेज को इस कोरोलरी से रिलेट किया, then our answer could be straight away written as f of x raised to n plus 1, but f of x तो sec x था, so it is sec x raised to n हमारा 3 था, 3 plus 1 4 होता है, तो sec raised to 4x upon 4 plus c डायरेक्टली आंसर आ सकता है. बट क्या यही कॉन्सेप्ट ये पिछले सम में चल रहा है? नहीं, पिछले में तो हमारा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हमें बचा रहा है. सो द पॉइंट इज दैट यू लर्न सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट. आफ्टर सॉल्विंग many questions, once you gain some confidence, then you can try to relate and solve certain sums only with such corollaries. Going to the next question. Integration x cube upon x square plus 1 the whole raised to 3. बैड पावर 3 है, 3 के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर भी 3 है बट अंदर सिर्फ x है, तो x को तो t लिख के कुछ फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन वैसा ही दिखेगा. सो सब्स्टिट्यूट x स्क्वायर प्लस 1 is equal to t. Derivative is 2x dx is equal to dt. Therefore, x dx is equal to dt upon 2. अब क्वेश्चन में ऊपर x क्यूब है, क्या हम इस x क्यूब को सोच सकते हैं एज x स्क्वायर इंटू x? तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, कैन दैट बी रिटन एज फ्रॉम हियर x स्क्वायर इज इक्वल टू t minus 1. See, in the substitution step, x square is t minus 1. So going back to the question, integration of, in this place of x square, let us mention t minus 1. In place of x dx, let's encircle this. In place of x into dx, which is in numerator, we can write dt upon 2. Let's write dt upon 2 here. डिवाइडेड बाय ये पूरा t था क्यूब, t क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कैन बी टेकन आउटसाइड, dt अपॉन 2 का जो 2 था. नाउ t अपॉन t क्यूब, दिस t अपॉन t क्यूब माइनस 1 upon t cube dt, because monomial है denominator में, so we have separated the integration, is equal to 1 upon 2 integration 1 upon t square, एक एक t कट कराया, minus t raised to minus 3 dt. We have memorized 1 upon t square's integration is minus 1 upon t. In case you have not memorized this, then take t raised to minus 2 upside the way we did for t raised to minus 3. T raised to minus 3's integration is t raised to minus 3 plus 1 is minus 2 divided by minus 2, close the bracket, plus c. Resubstitute t as x square plus 1, so we get last step is equal to 1 upon 2 times minus 1 upon x square plus 1 minus 2 का, एंड ये मिडल माइनस प्लस हो जाता है, प्लस t रेस टू माइनस 2 नीचे ले लेते हैं, 2 तो नीचे ही है, तो यहां लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टाइम्स t is x square plus 1 whole square and close the bracket. ये होल स्क्वायर लिखा है, ये t रेस टू माइनस 2 नीचे आ गया, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, ये 2 लिखा हुआ, this 2 is the way we can end this sum. So take x square plus 1 as t. When you get the derivative, you get x dx.
but learn to break x cube as x square into x, so that x dx combination becomes dt upon 2, while the leftover x square is written from the substitution as t minus 1. Denominator is t cube, and then split and you can manage. Let us take one more. We have 1 plus sin x upon 1 plus cos x. So 1 plus cos x is very popular with us. It is 2 cos square x by 2. And once you write this in half angle form, you will write sin x also as 2 sin x by 2 cos x by 2. Acha, we don't have the denominator's exact derivative in numerator. Or else we can do this way. One more thought came. Both were right. Even this thought is a good idea. We can write 1 plus or 1 upon 1 plus cos x, which will become 2 cos square x by 2, and hence sec square x by 2 by 2. Or we can write the second part, and we can write the second part, sin x upon 1 plus cos x. The reason for writing like this and not by the earlier way was, isn't the denominator's derivative going to come in numerator? See, cos x का derivative minus sin x है, तो हम यहाँ लिख सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे 1 upon 1 plus cos x को 1 upon 2 cos square x by 2. अच्छा, यहाँ पे वैसे कॉन्जुगेट भी अच्छा आइडिया था. वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स फॉर द फर्स्ट फ्रैक्शन. बट वो बेटर होता अगर 1 प्लस साइन एक्स होता या 1 माइनस साइन एक्स होता, तो उसके कॉन्जुगेट से इजी पड़ता है. यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का इजी फॉर्मूला है 2 cos square x by 2, while here let's write minus sin x, minus 2 times we have written, so that plus meaning stays, upon 1 plus cos x dx is equal to, देखो ये 2 तो नीचे ही रहेगा, बट cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2, sec स्क्वायर x by 2 अपॉन 2 माइनस ये इंटीग्रेशन, यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं, माइनस ये इंटीग्रेशन तो यहीं खत्म हो जाता है, log of mod of 1 plus cos x. Why? You have by now seen earlier sums also and have got some grip over this. Okay, this quantity is our f of x and this is our f dash x. So f dash x upon f of x is log mod f of x. Last step, इसका इंटीग्रेशन बचा. अच्छा, इसके कांस्टेंट को c1 ले लेते हैं, as this is done. इसका बचा हुआ है, this becomes is equal to 1 upon 2 integration of sec square is tan x by 2 upon coefficient of x is 1 by 2, so 1 by 2 minus same thing is rewritten log mod 1 plus cos x plus c1 plus c2. c2 is the constant for this integral that we did. Let's cancel out 1 upon 2. So only tan x by 2 remains. Our final answer is what is seen to you now. Tan x by 2 minus log mod 1 plus cos x. This is mod written. Mod 1 plus cos x. Plus, let's write arbitrary constant c, where c is equal to c1 plus c2. This is your answer. So initially we split, even though we have a binomial, we'd keep 1 plus cos x at both places. We know denominator's derivative can be created upside and so on. Let's take one more unique and important question. The question is integration of sin theta plus cos theta upon root sin 2 theta in such sums. Whenever you have sin 2 theta,
along with cos theta plus sin theta, or with a minus sin theta minus cos theta minus sin theta, and so on. Let us substitute integration of numerator quantity as t. This you will have to learn this. Integration of numerator as t, meaning is integration of numerator. Let's do the numerator's integration here. Sin theta's integration is minus cos theta, plus cos theta's integration is sin theta, and we are asking you to put it as t. Definitely its derivative would mean the numerator only. Derivative, because differentiation तो लेना पड़ता है after substitution. Derivative of minus cos theta is sin theta. Minus minus plus हो जाता. Plus cos sin theta's derivative is cos theta. d theta is equal to dt. देखो हमारा जो न्यूमरेटर है यही तो क्वांटिटी हमें अभी मिला है, एंड ये क्वांटिटी हमारा dt बन जाएगा. अब साइन 2 थीटा को t में कैसे लाए? थिंक ओवर इट. क्या करोगे? हम ये जो क्वांटिटी है जिसको हमने t माना है ना, जिसको हमने t माना है, इक्वेशन 1 ले लेते हैं. लेट अस स्क्वायर इट. व्हाई स्क्वायर? बिकॉज एज यू स्क्वायर यू विल गेट मिडल टर्म 2ab, है ना. ये देखो स्क्वायरिंग किया इक्वेशन 1 को, है ना. फ्रॉम वन we have squared it. So when you square, you get cos square theta plus sin square theta, which is 1, minus 2 cos theta sin theta is sin 2 theta is equal to t square. Therefore, 1 minus t square is equal to sin 2 theta. When you go back to the question, integration, देखो ये जो रेड में सर्कल किया वो तो dt बन गया. Divided by sin 2 theta is 1 minus t square, but within a root. So mention the root. 1 minus t square is equal to, its answer is sin inverse t, standard formula, plus c. Resubstitute t back as from equation 1. So final answer is sin inverse of minus cos theta plus sin theta, या ऐसे लिख दो sin theta minus cos theta plus c. The question was in theta form, hence the answer is looking like this. Usually x में होता, यहाँ पे theta form में दिया था question. We continue and let's see the next one. Sin x cos x upon sin raised to 4x plus cos raised to 4x, a very typical question. Mark it important. For such a question, mark it important. For such a question, हम क्या करते हैं? हम डिवाइड बाई cos raised to 4x करते हैं. डिवाइड बाई cos raised to 4x. कहाँ पे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. तो दिस बिकम्स, ये इम्प्लाइज लिखा है इंटीग्रेशन sin x cos x divided by cos raised to 4x upon sin raised to 4x upon cos raised to 4x plus cos raised to 4x upon cos raised to 4x is 1 dx becomes equal to, the numerator is, one of the cos factor gets cancelled out, तो ये cos क्यूब हो रहा है यहाँ पे. sin x upon cos x is tan x, एटलीस्ट वो लिख लेते हैं tan x. देन क्यूब में से एक cos तो चला गया tan x में, तो एक cos स्क्वायर x बचा जिसका रेसिप्रोकल होगा sec स्क्वायर x dx अपॉन tan raised to 4x plus 1. tan raised to 4x को लिख सकते हैं
tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, tan रेज टू 4x आ रहा है, tan square x the whole square plus 1. Now you are thinking why like this? Because tan square x का डेरिवेटिव, हमारा डेरिवेटिव थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. tan square x का डेरिवेटिव है 2 tan x into sec square x, तो सिर्फ 2 मिसिंग है ऊपर. तो हमें ये फॉर्म में लिखने के बाद लेट tan square x equal to t लिखता है. तो यहां बन जाएगा 2 tan x, डेरिवेटिव ले रहे हैं, 2 tan x sec square x dx is equal to dt upon 2. So tan x into sec square x dx is equal to dt upon 2. So हमारा क्वेश्चन बदल रहा है, और अब यहाँ पे जहाँ सर्कल कर रहा है ये क्वांटिटी हो गई हमारी dt अपॉन 2. ये हमारा t है विद अ स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1. सोचो इंटीग्रेशन क्या याद करा है इसका, dt अपॉन 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इज tan इनवर्स t, है ना. सो इट इज 1 अपॉन 2 हाफ tan इनवर्स t प्लस c. t के जगह सब्सटीट्यूट कर दो tan स्क्वायर x को. सो हमारा लास्ट स्टेप बन जाता है इज इक्वल टू, यहीं लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स tan square x plus c. This will not become x square by inverse trig function. It is only for tan inverse tan x it becomes x. यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा. Looking at one more similar, not similar but एक algebraic switch में जा रहा है, but root nature है. हमने रूट वाला क्वेश्चन थोड़े टाइम पहले किया था जहाँ पे हमने बताया कि अगर रूट में कुछ आता है like this, रूट में आता है, then we suggest you to take the substitution as t square. So ट्राई करते हैं यहाँ पे जो रूट एक्स है, यहाँ पे जो रूट एक्स है उसमें जो x है उसको t स्क्वायर लेने का. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट x एज t स्क्वायर, ये जो रूट x है, बिकॉज वो वेरिएबल है. सो इट्स डेरिवेटिव विल बी dx is equal to 2t dt. So integration becomes dx के जगह पे 2t dt upon root of 1 plus root x बन जाएगा सिर्फ t, because when you root both sides only t will remain, but this outer root is still there. Now to proceed from here we can do, one is adjustment, ये 2 बाहर ले लेते हैं, पहले तो ये 2 बाहर ले लेते हैं, एंड हमारे पास अब बचा है t dt अपॉन रूट 1 प्लस टी. तो एक है और एक सब्स्टिट्यूशन ले लो. ऐसे सोचो 1 प्लस टी बैड पावर में हाफ में अटका हुआ है, तो 1 प्लस टी को हमने सपोज m स्क्वायर ले लिया, या फिर ये तो कर ही सकते थे. वी कैन ऑल्सो डू दिस वे, ऊपर ही हम 1 प्लस टी को क्रिएट कर देते हैं. कैसे? बाय एडजस्टमेंट. सो 2 टाइम्स इंटीग्रल 1 प्लस टी माइनस 1 divided by root 1 plus t dt. Now when we split we will get 2 times integral 1 plus t upon root 1 plus t is simply root 1 plus t in numerator minus ये 1 upon root 1 plus t तो बचा हुआ है, ये 1 plus t तो बचा हुआ है dt. अब रूट का इंटीग्रेशन हमने नहीं बाय हार्ट किया है, तो इसको रेस टू हाफ करके करना पड़ेगा. इट्स अ लीनियर टर्म 1 प्लस टी, तो यू कैन कंपेयर इट विथ x रेस टू n एंड कंप्लीट इट. लेट्स राइट नेक्स्ट स्टेप
is equal to 2 times integral 1 plus t raised to half. इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि हमने 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन लर्न किया है 2 रूट एक्स, तो इसको फिर नेक्स्ट स्टेप पे डायरेक्टली लिखेंगे इंटीग्रेशन करके 2 रूट 1 प्लस टी. अभी इसको ऐसे ही कॉपी कर रहा है. अगर आपको चाहिए तो इसको भी आप ऊपर रेस टू माइनस हाफ करके लिख लेते हैं एंड देन सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट आप इंटीग्रेट कर लो. इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस टी रेस टू 3/2, हाफ प्लस 1 3/2 होता, डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 2 रूट 1 प्लस टी प्लस सी. अब टी के जगह हमें रूट एक्स डालना है, बिकॉज यहाँ से टी इज इक्वल टू रूट एक्स आएगा. सो यहाँ लास्ट स्टेप लिख लेते हैं. इज इक्वल टू लेट्स मल्टीप्लाई दिस 3 by, or just take reciprocal of 3/2, so 2 times 2/3 1 plus root x raised to 3/2 minus 2 root 1 plus root x brackets closed plus c. If you want, you can take 1 plus root x raised to 3/2 can be written as 1 plus root x into root 1 plus root x. You know what we mean by this is 3/2 power हमने एक बार पहले भी बताया. You know a raised to 3/2 is equal to a root a. तो यहाँ पे हम इसको ऐसे एंड कर सकते हैं. कभी कभी MCQ में क्या होता है दैट द ऑप्शन दैट यू हैव, हमें आइडिया होना चाहिए ये कैसे आ रहा है. सो वी कैन राइट 2/3 इंटू 1 प्लस रूट एक्स इंटू रूट 1 प्लस रूट एक्स. हमने 3/2 पावर को ऐसे लिखा हुआ, माइनस 2 टाइम्स रूट 1 प्लस रूट एक्स ब्रैकेट्स क्लोज्ड प्लस सी. अब हमें चाहिए तो 2 टाइम्स रूट 1 प्लस रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं. सो इट विल बिकम 2 2s are 4, रूट 1 प्लस रूट एक्स कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस रूट एक्स का एक टर्म बचा, अपॉन एक 3 बचा हुआ है, माइनस ये तो पूरा ही चला गया कॉमन में, 1 प्लस सी. ऐसे भी एंड कर सकते हैं सब. So important was substituting x as equal to t square. Once you reach here, we immediately thought of adjustment, adding one, subtracting one, separating, and then after separating, it was manageable. ये last steps तो simplification के. थोड़े और questions लेते हैं, थोड़े और important questions की तरफ बढ़ रहे हैं. We have 1 upon 1 plus tan x. We can write this as sin x upon cos x. So our first step of integration will be sin x upon cos x. If you LCM, then it will become in denominator cos x plus sin x. And upon cos x will go in numerator. For one more time, better understanding, we are writing this tan x as sin x upon cos x. And then multiplying cos x with 1 plus sin x, the whole upon cos x goes up. Now treat this as a typical question. We can express this as integration of, and we can rewrite cos x plus sin x in numerator by copying
the denominator as seen here, cos x plus sin x. And now let's further write cos x minus sin x. Now you must be wondering from where are these points coming. Derivative of sin x is cos x and derivative of cos x is minus sin x. At the same time, you get a benefit. Let's see, sin x and sin x are cancelable. You should not cancel it. We are just discussing it. And then cos x plus cos x is 2 cos x. So in the numerator, you had only 1 cos x in earlier step. Now you are forming 2 cos x. So you should multiply by half outside the integration. So when you will split this, you will get integration of cos x plus sin x upon cos x plus sin x will become 1 plus cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. Now we are used to this kind of formation where denominator's derivative is seen in numerator. And how do we deal with that? By treating the denominator as f of x and the numerator we think of it as f dash x. So this becomes equal to, the last step for this question is equal to 1 upon 2 times x plus 1's integration is x plus log of mod of cos x plus sin x plus c. This is a very typical question. You should note down this important step. Let's mark this step as important step. We take one more. We have now cos x upon the half angle method is written cos x by 2 plus sin x by 2 whole cube. So we can write cos x also in half angle form. This cos x can be written in half angle form as cos x formula is cos square x by 2 minus sin square x by 2. This can be written as a plus b, a minus b. So starting with the first step, integration of this becomes cos x by 2 minus sin x by 2, a minus b factor we are writing, into cos x by 2 plus sin x by 2 plus sin x by 2 the whole upon cos x by 2 plus sin x by 2 the whole cube dx. The whole cube dx. We can cancel one factor at least. So cos x by 2 cancels with this cube and it becomes a whole square. Now see this bracket, cos x by 2 plus sin x by 2's derivative can be made upside. So we can substitute cos x by 2 plus sin x by 2 इक्वल टू टी. देखो यहाँ डिग्री 2 है, तो ये log mod f of x नहीं होगा पिछले सम जैसा. So we are substituting everything within the bad power as t, ऐसा सोच के कर रहे हैं. Derivative of cos x by 2 is minus sin x by 2 into x by 2's derivative is 1 by 2. So it is minus 1 by 2 sin x by 2 plus 1 by 2 cos x by 2 times dx is equal to dt. We can take 2 on the other side. We can take this half ka 2 on the other side. So we get therefore cos x by 2 minus sin x by 2. We are just rewriting in the order, positive term पहले लिख रहे हैं. dx is equal to 2 dt
2, this half wala 2 has got cross multiplied. Now look at our step. We have cos x by 2 minus sin x by 2. We are encircling it. We are encircling dx also. This will be replaced as 2 dt. So integration becomes, now integration symbol will come. It becomes 2 dt upon t square. But we have memorized 1 by t square is minus 1 by t. So this is minus 2 by t plus c. Resubstitute t as. So we get minus 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2 plus c. This is your t term written plus arbitrary constant c. This is your answer. So earlier it was trigonometric formula, then factorization, cancellation, and then putting the denominator term as t without the 2, without the degree. Just put this as t and then substitution gets you the answer. Let's take one more. Whenever in numerator you see 1 and then in denominator you see cos square x or sin square x or both and a constant, then you can divide numerator and denominator by cos square x or sin square x. What we meant was that here we are writing some situations that if you have 1 upon a plus b sin square x, or you have 1 upon or dx upon a plus b cos square x, or you have dx upon a sin square x plus b cos square x, or along with this you have a constant dx upon a sin square x plus b cos square x plus c. Then we should divide numerator and denominator by cos square x or sin square x. So let's go to this question. See, is this question looking like this one of the form? Yes, it is looking like this second form. So if you have in denominator 9 plus 16 cos square x, you can divide by either cos square x or by sin square x. Let's say we choose cos square x. So when we divide by cos square x, 1 upon cos square x is sec square x. So question becomes sec square x dx upon 9 upon cos square x is 9 sec square x plus 16, as cos square x will cancel out. Now this sec square x of numerator is the derivative of tan x. So we can write this denominator's sec square x as 1 plus tan square x. So this is sec square x dx upon 9 into 1 plus tan square x plus 16 is equal to sec square x dx upon 9 plus 16 is 25, because when you open brackets 9 ones are 9 plus 16 is 25 plus 9 tan square x. Now in one of the previous sums, not the immediate one, in the earlier cases, we had substituted tan square x as t, because in numerator tan square x का derivative था. In this case, exact sec square x is the derivative of tan x, not tan square x. Tan square x का तो 2 tan x sec square x है. So we should
choose, substitute tan x is equal to t. Its derivative will be sec square x dx is equal to dt. Let's integrate. So on integration we get dt upon 25 plus 9t square is equal to dt upon, we can write this as 5 square plus 3t whole square, and this is like 1 upon a square plus x square, whose integration is equal to, let's write its integration here, its integration is equal to 1 upon a, that is 1 upon 5 tan inverse x upon a, which means 3t upon 5 plus c upon coefficient of t should not be forgotten, which is 3. So it is 5 into 3. So final step is 1 upon 5 3s are 15 tan inverse of 3t is 3 tan x as t is tan x upon 5 plus c. This is your answer. Important question. You should practice this. Had you done this by dividing by sine square x, you would have started getting cosec square x and then cot square x. Then your answer would have come in cot x form. Even that is correct. But cot x derivative is minus cosec square x, so that minus would have come. That was the reason why we insisted if you can divide by cos square x. Even if in denominator you have just signs like this, if you have a question, you can still divide by cos square x and complete the sum. This question, we have otherwise no choice, we need to integrate this. Just by taking cos x common, it's not going to go anywhere. Let's divide by cos square x. If you divide by cos square x, the numerator and denominator, see what happens. It becomes sec square x dx divided by, when we divide sin x cos x by cos square x, it will look like this: sin x cos x upon cos square x plus 2 will remain. Now cos x factor gets cancelled. So sin x upon cos x is simply tan x. So this is sec square x dx divided by tan x plus 2. And exact tan x derivative is sec square x while 2's derivative is 0. So straight away the answer is log of mod of tan x plus 2. We cannot ignore the 2 in the mod, we have to write that also, plus c. This is f of x. This is your f of x. And the numerator is f dash x. Alternatively, we can do this sum by substituting tan x equal to t or tan x plus 2 equal to t and still get the same answer. Continuing with some more questions. This is a typical question, and the typical question demands a typical method. For question of the form where you have a cos x plus b sin x upon c cos x plus d sin x we will not be able to get exact derivative of denominator in numerator. We'll adopt a following approach.
we'll write for this typical question, express numerator is equal to a into denominator plus b into d by dx of denominator. The meaning of this can be learned, understood as we proceed. So this is numerator is sin x plus 2 cos x is equal to a into denominator is 3 sin x plus 4 cos x plus b into derivative of denominator is, this is denominator, its derivative is 3 cos x minus 4 sin x. So on multiplying we get this is equal to 3a sin x plus 4a cos x plus 3b cos x minus 4b sin x. We can take sin x common. So we get 3a minus 4b times sin x. Similarly, plus 4a plus 3b times cos x. While on the left side, we still have sin x plus 2 cos x. Let's compare the coefficients of both sin x and cos x. Sin x coefficient is 1, while here it is 3a minus 4b. So on comparing, we get 3a minus 4b is equal to 1, and 4a plus 3b, 4a plus 3b is equal to, here cos x coefficient is 2. We can do simultaneous equation here. We can multiply this equation by 3 and this equation by 4, and we get 9a minus 12b is equal to 3, and this is 16a plus 12b is equal to 8. Let's add both equations. So on adding we get 12b getting cancelled. We can see 12b will get cancelled if you add. So we get 9a plus 16a is 25a is equal to 3 plus 8 is 11. Clearly, a is equal to 11 upon 25. Let us substitute this value of a in any one of the two earlier equations. Say we substitute it here. So we get 3 into a, 3 into 11 upon 25 is 33 upon 25. This 1 can be brought here. Minus 1 is equal to 4b. This 4b is taken on the right side. We simplify this and we get 4b is equal to, the LCM will be 33 minus 25 is 8 upon 25 is 8 upon 25. This is 4b. We can cancel 4 ones, 4 twos. So we get b is equal to, 2 upon 25. We now continue. Let's remove this part. We now continue and write this here as equal to. So let's now take up our questions numerator. So when you take questions numerator, you get integration, and this needed an integration.
So we replace this numerator by equation 1. See, numerator is here also. This is also numerator. But see, there is a equal to sign here. So we can write a ke jagah pe 11 upon 25. So we get 11 upon 25 times this 3 sin x plus 4 cos x. 3 sin x plus 4 cos x plus, now see, it's written b here, but b is 2 upon 25. 2 upon 25 times 3 cos x minus 4 sin x. 3 cos x minus 4 sin x. The whole divided by. So this was the numerator of the question, which has been replaced with from equation 1. And let's copy the denominator, whatever is there, which is 3 sin x plus 4 cos x dx. From here it is clearly visible that when you split it, you will get 11 upon 25 remaining, as these two will cancel out. So only 11 upon 25 will remain, plus 2 upon 25. 2 upon, let's say we separately write the integration, 11 upon 25 integral dx plus 2 by 25 को भी बाहर रख देता है, like this. So we write dx here plus 2 upon 25, and know that this term's derivative is this. That's what we had written here, derivative of denominator. So if denominator is f of x and numerator is f dash x, let's write down the integral. It is 3 cos x minus 4 sin x divided by 3 sin x plus 4 cos x. And this will help us to get to the last step of the sum. You know already by now what the last step is. Integration of 11 upon 25 is 11 upon 25 into x. So trying to write the last step is equal to 11 upon 25x plus 2 upon 25 log of mod of 3 sin x plus 4 cos x plus arbitrary constant c. So this is your answer. If you are observing the answer and seeing a and b values, जो भी a value था उससे x multiply हो गया, और जो भी b value था उसके साथ log of mod of denominator multiply हो गया. So एक बार a and b आ जाता है, then the sum is easy. We also have a shortcut for this sum. This is a very typical sum. And for this typical sum, let's see if I can have some better way of getting the answer if it was a MCQ, or if you just needed to cross check this. So we can write a shortcut method: a cos x plus b sin x upon c cos x plus d sin x dx is equal to, it is given by AC plus BD upon C square plus D square times X plus AD, this is AD
minus bc upon c square plus d square times log of mod of c cos x plus d sin x plus c. So if in case you, this is a here, let me write it properly. So in case you ever wanted it for MCQ, you can directly do this way. Just to observe here, see this is AC and this is BD. That's what we have written here, AC plus BD. While c square plus d square is nothing but sum of squares of the coefficients of denominator of cos x and sin x. The same is written here also. And in the numerator here it's AD minus BC. So we cross multiply like a determinant, AD minus BC. So this way you can remember, and don't forget to multiply the first bracket by x and the second bracket by log mod denominator. Just to take an example, if you want we can take the earlier example only, but just ensure the question starts with a cos. So let's copy down the earlier question. It is 2 cos x plus sin x. It is 2 cos x plus sin x divided by 4 cos x plus 3 sin x. So by shortcut method the answer would be multiplying 2 and 4, which is 8, and this is 1, so multiplying 1 and 3, which is 3. So we write here 2 into 4 plus 1 into 3 divided by 4 square plus 3 square, sum of squares of denominator, times x plus multiply, cross multiply. So we write 2 into 3 minus 4 into 1 divided by 4 square plus 3 square log of denominator, which is 4 cos x plus 3 sin x plus 3 sin x. Let's write x here. 3 sin x plus c. And you can verify 8 plus 3 is 11. So yes, it is 11. Upon this was 25. And this is 6 minus 4 is 2, and this is 25. And we have got same answer above. See, 11 upon 25 times x, 2 by 25 log mod, 3 sin x plus 4 cos x. So this way you can learn for shortcut part. We have one more question of this same type. Even this needs to be done in the same way by expressing. So when you have a question like this of the form a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d, again we have to use same procedure as we used above by writing express. Numerator is equal to, same like before, numerator is 4 e raised to x minus 25 is equal to a into denominator 2 e raised to x minus 5 plus b into d by dx of denominator, which is 2 e raised to x minus 5 ka derivative 0. We can multiply this and get 2a plus 2b times e raised to x minus 5a, this 5a, and this 2b and 2a, e raised to x is taken common, and here we continue writing 4 e raised to x minus 25. Let's do compare. On comparing we get 2a
plus 2b is equal to 4, and we get minus 5a is equal to minus 25. Clearly a is equal to therefore 5. Substituting a is equal to 5, here we get 2 5s are 10 plus 2b is equal to 4. 10 minus 4 और 4 minus 10 करवा देता है, 2b equal to minus 6. We get therefore b is equal to minus 3. Let's substitute a and b here in equation 1. तो हम हमारा क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर है वो नहीं लिखेंगे और उसके जगह पे जो इक्वल टू करके दिया है वो लिखेंगे along with a and b. So now the question actually starts, and we now write this as implies integral. We get in the numerator a के जगह पे आएगा 5 times 2 e raised to x minus 5 plus b के जगह आएगा minus 3 times 2 e raised to x upon the denominator, which is 2 e raised to x minus 5 dx. Let us split this. So when you split this, you will get is equal to integral 5 बचेगा minus 3 times 2 e raised to x upon 2 e raised to x minus 5. यहाँ का तो पहला फैक्टर तो कट हो गया, right? These two have got cuts. That's why we have written only a 5 here. Last step is dx. Last step. 5's integration is 5x. So we get is equal to 5x minus 3 times, and denominator's derivative is in numerator, log of mod of 2 e raised to x minus 5 plus c. In equation 1 we have done exactly same thing what we did in the previous sum. Express numerator is equal to a into denominator plus b into d by dx of denominator. We also have a MCQ shorter version of this, just in case sometimes you may find it useful. The shortcut for this is, let's try to write it here, a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d answer dx. Answer is ratio of constants b upon d into x plus ad minus bc. So we write here ad minus bc upon the product of c and d, which is simply cd, into log of mod of denominator, which is c e raised to x plus d plus arbitrary constant c. So let's see if this shortcut will work for this sum. So the answer is b upon d. So let's try to write it. 4 e raised to x minus 25 upon 2 e raised to x minus 5 dx. The answer will be minus 25 upon minus 5 into x, which is going to be 5x, which matches, plus ad minus bc. So minus 5 into 4 is minus 20, minus 2 into minus 25 is minus 50, so it will become plus 50, divided by cd is 2 into minus 5 is minus 10, log of mod of denominator, which is
this only, log of mod of denominator. Mod of denominator is 2 e raised to x minus 5 plus c. Let's verify this result. Minus 20 plus 50 will be 30. 30 upon minus 10, this is 30 upon minus 10 is minus 3, which matches with this. So see, you can learn this by shortcut for your MCQ part.